Hi, I'm Dusk Yo, what's up? I'm Blaze, and and welcome to Bad Trip. Gang PTG. Yeah, what are you gonna talk about today, We're bro? going to talk about online college And cheating. shenanigans. Yeah, we're basically gonna rant about the education system. Kind So of broken education system. yeah, we'll find that out in the Then episode. we'll give it a listen. Yeah, so without wasting any further time, we'll allow you to jump right to the episode. Peace. Peace. Yeah. So, how was your online college experience? What do you think about online stuff? Dude, online college was like a sweet and sour thing for me. Talking about offline college, the thing I loved the most was staying outside classrooms, right? Yeah. So I participated in a lot of college clubs, college societies, couple of cultural societies, and hanging out with friends in college, outside college, Yeah. and making memories. And I sort of believe that I'm getting much more to learn from those practical experiences rather than staying inside the college and learning mathematics. I always believe that the syllabus can be covered easily by studying on your own, and I treated college as a place where I can meet new people and I can learn more about life in general, right? Because I Yeah. was living alone and I had to basically shape my life the way I Yeah. wanted, and on my own too, right? Hmm. Because now you are still in college but at your home, Yeah. so you don't get that sort of independence or that Yeah. sort of rather freedom to uh, craft your life the way you want and live the way you want, because I had that during my first year at college. Yeah. So I loved that. And the thing I hated the most was attending classes, dude. I was Yeah. just sick of attending classes, sick of maintaining my attendance, because I never liked the Yeah. teachers, or most of the teachers I didn't like, most of the subjects I didn't like. I liked a couple of subjects mein jata tha. I would Huh. go and sit in their classes. I would be as active as possible because I love to interact with that teacher. Hmm. I love to study that very subject. But uske baad it's game over. I don't want to go to Yeah. college or classrooms. I want to go to college, but I don't want to enter any classroom. Yeah. But then online thing came, right? Yeah. And online thing stripped me off from the very favorite thing of mine. I loved hanging out in college, loved staying outside home and Yeah. having new experiences. Wo band ho gaya. I'm Huh. just stuck at my home, just like in class 12th. Hmm. And even worse than class 12th, I'm not allowed to go outside my home. Yeah. I'm just sitting at my home, in my room, just Hmm. doing stuff. Yeah. But at the same time, I don't have that pressure of attending classes or following up Hmm. with syllabus, right? Because I can easily cheat Cheat even. and Huh. sort of complete my deadlines and stuff like Huh. that. And that has given me the opportunity to, You can focus on yourself and yeah, I can you focus on can find myself. out your passions and stuff. And that's what I exactly did. I Hmm. introspected, I sort of wrote down the things that I want to do in life, Yeah. how I want to shape my life. Hmm. I had a philosophical awakening that this is how I will move forward in my life, this is how I'll react to things that happen to me. You And worked on yourself and yeah, I introspected every basically, single thing. What do you want to do? How do you want to do yeah, those things? basically that's the thing I did, and it helped me a lot. Ever Yeah. since I was locked in the house, I started, my whole direction of life changed, dude. Hmm. I was a different person before lockdown, Yeah. and I can confidently say this, that I am a completely different person now in terms of my thought process, in terms of my long term goal, short term goal. My Yeah. definition about a lot of things changed, and that happened because online college gave me the opportunity to work on myself, because Yeah. now I was not bound to work for the marks that I Hmm. needed. Right. And like, marks I needed only because of social, only to satisfy social acceptance कि हाँ कहीं हाँ placement में. कहीं And even my idea of placement was like, I can get placed without marks because I'll work on my skill, skills because I, वो ज़्यादा important होते हैं yeah, आपके exactly. marks से. Yeah. So I feel that it has been a sweet and sour experience. It has helped me in sort of fixating my life goals and, Yeah. Figuring out your yeah, goals. evaluate them and actually evolve them. Yeah. Yeah. What about you? You have a little bit experience of Yeah. online college too, Our right? college started online. अभी तो Yeah. सब online अभी है. तो तुम्हारा तो सभी सब online है ना? online है. For me, it's like really mundane. It's like completely boring. I don't Hmm. like Yeah. listening to the teacher. मतलब जो ये फॉर्म है ऑनलाइन स्टडिंग की, ये बहुत अच्छा है अगर हम ध्यान से देखें. Hmm. तो मतलब आप टीचर्स सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं, आपको नॉलेज मिल रही है.
लेकिन वो जो एक्सपीरियंस है पढ़ने का वो फुलफिलिंग नहीं लगता मेरे को या बिल्कुल ये भी, तो है। उसमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती। जैसे अब आप कॉलेज जाते हो, हम्म मैं 1 महीना कॉलेज गया, तो हम्म दैट एक्सपीरियंस वाज फुलफिल्ड। मतलब या you're going to the college, classing, meeting friends, and doing networking, meeting new people, your seniors, your teachers, and interacting with them. या You were doing all that. वो एक much more fulfilling experience था हम्म than doing online stuff. मतलब online better है क्योंकि आपको सीधा knowledge मिल रही है, या विदाउट आप वेस्टिंग द विदाउट टाइम। कोई मतलब उसके अंदर डिस्ट्रैक्शंस नहीं है। हम्म जनरली देखें तो डिस्ट्रैक्शंस होती हैं बहुत सारी। हाँ, कि यहाँ से वहां तक जाने में तुम्हारे कुछ वो हाँ, लेकिन एनर्जी वही खर्च हुई। चीज एक फुलफिलिंग सी मेरे को लगती है कि वो एक हाँ, एक्सपीरियंस दैट बना वाज दिया। एक्सपीरियंस राइट, हाँ, वही चीज ये और भी ये है। बड़ा कंप्रेस्ड वे है कॉलेज का हम्म पढ़ने का, और ये बड़ा मंडेन है, और आधा टाइम एंड हम फोकस ही नहीं करते। या एंड लाइक तुम लोग की तो क्लासेस आर मैंडेटरी टू अटेंड राइट, इन या माय कॉलेज देयर इज नो सच मैंडेशन, द यूनिवर्सिटी हैज सेड कि attendance doesn't count या because it's pretty obvious that people who are not privileged enough, and since I study in a public university, राइट a government university, they can't expect everyone to have data every day and राइट attend all the या classes, so they just remove the foundation of attendance. या What that did to me was that I was never actually a fan of the subjects I study or या the way I'm taught those subjects, या right? I need to know something else, but the teachers are teaching me just what's हम्म, written in the book, and I used to think कि ये तो मैं खुद कर लूंगा. खुद कर लूंगा। There's no point in sitting your lecture if हम्म, you're just going to come and narrate me. मुझे या पढ़ना आता है, मैं खुद खुद पढ़ कर लूंगा सकते यार. हैं, कोई स्किल नहीं मिल रही, कुछ सीख हाँ, नहीं रहे। एटलीस्ट अगर उसमें से कुछ मतलब वन ऑफ माय फेवरेट टीचर्स, ही यूज्ड टू एक्चुअली नॉट टीच अस मैथ्स बट टीच अस मोर अबाउट लाइफ. मतलब या उनको पता था कि ये लेक्चर में तो मैं यही बता सकता हूँ, हाँ, बट उसके साथ साथ वो बताते रहते थे कि तुम्हारे टीचर तुम्हारे साथ इंटरेक्ट एक कर रहे हैं. इंटरेक्शन होती है, एक बॉन्ड होता है। वही, वो बॉन्ड करने के लिए उसी मैं बॉन्ड जाता की था. वजह से ही इज योर फेवरेट टीचर। Yeah, that's why he's my favorite teacher. Or the way they interact, the way they treat the subject. या But most of the teachers in my college were like, they would come, they would read and go. तो मुझे था कि मैं हाँ इनकी ऑनलाइन क्लास तो नहीं लगा रहा. हाँ, नहीं लगा रहा। एंड जब अटेंडेंस हट गई उसके बाद से तो आई जस्ट लेफ्ट ऑनलाइन हाँ क्लासेस. मैं पहले अटेंड करता था, सुनता नहीं था. देन आई स्टॉप्ड अटेंडिंग कि हाँ या भाई, इट्स नॉट एनी मैंडेटरी थिंग टू डू, तो या मैं ये इन नहीं आवर करूँ. केस इट इज मैंडेटरी टू या मतलब गिव द इट्स अटेंडेंस, मैंडेटरी. अटेंडेंस इज मैंडेटरी, बट half of the time we are talking to our friends on the WhatsApp group, हाँ वही we are ये भी. scrolling the Instagram feed, we are doing other stuff, we are हम्म not focused on that lecture because it's like या really boring, you know, you can't interact, एंड there ऑल is network issues। वही तो. एंड नेटवर्क इशू आर अ मेजर हाँ, थिंग. तुम्हें कुछ it's a समझ major आने thing। लगता है, हाँ, बीच नेटवर्क में इशू. क्लास बंद हो जाएगी। एंड इट has affected a lot of things यार. Like people have gone crazy by this online या thing कि you're just confined into your room, and हाँ, that's one of the worst things corona has done, that तुम्हारा वो सारा एक्सपीरियंस ही उसने एक एक्सपीरियंस, रूम में लॉक कर हाँ दिया. वही तो, जिसकी वजह से ये बड़ा बोरिंग है, बड़ा हाँ, मंडेन it's लगता है really मुझे। boring dude. After time you need a break. हाँ, You deserve a break कि भाई तुम उस रूम से बाहर निकलो. sitting in one room whole day या वही तो. attending the classes। And attending these classes loses its all meaning when you come to know कि हाँ हम चीट कर सकते चीट हैं. कर सकते हैं। And it's like the easiest way. हाँ Like आज मेरा टेस्ट था and मैंने बुक भी नहीं खोली थी. Legit, या I had a test today and I didn't even open the book. I knew कि the moment test will come, I'll go to Google, I'll download the solutions of my textbook, मैं या वहाँ से राइट, देखूंगा एंड आई and विल डू दैट, मेरे I'll. मार्क्स आ जाएंगे, हाँ, मार्क्स आ जाएंगे. एवरीथिंग इज गुड। That's what matters. हम जिस हाँ, एजुकेशन सिस्टम सिस्टम, में हैं, हाँ राइट। the only thing, tell me if anything else हाँ, matters. अभी नहीं, तो यही है कि भाई सिर्फ तुम ग्रेड्स मार्क्स मैटर, पीपल जज यू ऑन ग्रेड्स, on the योर basis, मार्क्स, योर that's the परसेंटेज, sole योर basis of जीपीए, judgment. दैट्स No इट। one asks या me कि तुम लाइफ में कितने अच्छे हाँ, हो तुम्हारे या पास यू वर्किंग ऑन योर स्किल्स और नॉट। forget skills यार. No one judges if you can accept failure or how you या behave when you succeed. ये सब तो कोई पूछता ही नहीं. This is कि हाँ, कितना कितने percentage. मार्क्स कितने आए। Yeah, and that's why you just cheat, and cheating becomes the easy way out कि हाँ भाई मुझे और कुछ तो नहीं सीखना था, I just have to get marks, मार्क्स, और मुझे वो चीटिंग पूरा करनी है. स्कूल जितना भी हमने स्कूल किया उसमें यही तो हमें बनाया गया है कि Yeah. मार्क्स लाने हैं, Yeah, और कुछ तो हमें actually, सिखाया नहीं, अगर ध्यान से सोचे। actually स्कूल ने हमें ट्रेन किया कि आपको मार्क्स लाने हैं बस। yeah, actually that's something really interesting, and we या don't realize कि it is the school which has taught us this way, right? I या often hear people saying कि I'm not in the degree of my interest. या मतलब डिग्री से मतलब the thing they are studying in their colleges, it's not of their choice, या and they sort of blame the college administration कि यार इसमें ये थोड़ी पढ़ाना था, ये हाँ थोड़ी पढ़ाना था. But what I think is कि it is the fault of those, not even those people, it's the fault of the society they were society, living in, because उन लोगों को कभी
बताया ही नहीं कि एजुकेशन तुम, सिस्टम हाँ, बेसिकली क्योंकि अब 10th तक यार तुमसे वो पूछा ही नहीं कि पूछा तुम्हें ही नहीं मैथ पसंद है कि पसंद नहीं है है। या नहीं, वो एक क्वेश्चनिंग है ही नहीं ना, आपको क्या करना है, किस चीज में हाँ, आपका इंटरेस्ट है। इंट्रोस्पेक्ट करते नहीं हम, हाँ एंड देन वी रियलाइज बाद में आके व्हेन वी ग्रो ग्रो अप अप। वी गेट सर्टेन सेंस हाँ ऑफ थिंकिंग कैपेबिलिटी, तो वी आर एबल टू रियलाइज कि ये तो मेरा इंटरेस्ट ही नहीं इंटरेस्ट ही था। नहीं है, आई तब तक लाइक, बहुत देर हो चुकी है बहुत देर हो जाती है यार तब तक, मतलब यू हाँ थिंक यू हैव अ कैमरा इन योर हैंड एंड यू से कि यार मैं ये करने नहीं आया था, व्हाई एम आई स्टक इन दिस कॉलेज, यू स्टार्ट या ब्लेमिंग द सिचुएशन, बट इट्स एक्चुअली द सोसाइटी एंड द and the एनवायरनमेंट, education system, the education how system. that brought you up, Yeah, that affects. because everywhere in the society, the only thing that students are expected to talk about or give to their parents are marks. Marks No one talks about कि about तुम्हारी skill, skill, कोई and अपने ऊपर काम नहीं करता अपनी स्किल्स पे, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस बुक स्मार्टनेस से, उस हाँ मार्क्स से। हाँ, वो मार्क्स, और वो मार्क्स भी यार मतलब कितने रिस्ट्रिक्टेड चीजों पे है ना, लाइक हाँ मार्क्स, अगर इफ यू आर इन अ थिएटर स्कूल एंड यू लाइक थिएटर और ड्रामा, तो तुम्हारे लिए वो मार्क्स सही हो जाएंगे। हाँ बट यहाँ जो मार्क्स हैं, वो मार्क्स हैं तुम्हारी स्कूल लाइफ तक, वो मार्क्स हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स मैथ्स बाय एंड लैंग्वेज, बायोलॉजी, इन सबके। या और पीपल जनरलाइज की सबका इसी में इंटरेस्ट होगा। होगा, लाइक वही गिनती तो के कितने सब्जेक्ट्स हैं यार, you have main stream में you have this PCM साइंस के subjects and then you पीसीएम have कॉमर्स के पीसीबी subject, कॉमर्स एंड आर्ट्स कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज एंड आर्ट्स, या जिसमें तुम्हारा पॉलिटिकल साइंस वगैरह वही, है। एंड वी अज्यूम कि जितने भी बच्चे हैं सबका सबका इन्हीं में इंटरेस्ट इंटरेस्ट यही होगा, होगा, इन्हीं चार चीजों में इंटरेस्ट इन्हीं होगा, 4-5 सब्जेक्ट्स स्ट्रीम्स में। में। हाँ, और मतलब हो सकता है कि भाई कोई बंदा हो जिसको फिजिक्स में बहुत जेन्युइन इंटरेस्ट हो, हाँ केमिस्ट्री में, बायो में, पॉलिटिकल साइंस में, हाँ इकोनॉमिक्स में, हर में किसी का जनरल इंटरेस्ट हो इंटरेस्ट सकता हो, है। बट ये जरूरी है कि सबका सबका ही जनरल इंटरेस्ट इंटरेस्ट हो होगा, ही। क्या पता किसी को कुछ क्रिएटिव करना है, वही, किसी को कुछ क्रिएटिव करना है, किसी किसी को, को स्पोर्ट्स में जाना है, हाँ, किसी किसी को कुछ योगा करनी है यार, किसी को बैडमिंटन खेलना खेलना है, है, किसी को किसी एक्टिंग करनी है, किसी गाना को गाना सिंगिंग है। करनी है। बट स्कूल में उनके लिए स्पेस ही नहीं है। एंड आई एम हाँ टॉकिंग, नॉट टॉकिंग अबाउट हाईली प्रिविलेज स्कूल्स, जो प्रिविलेज स्कूल्स वहाँ है, हाँ लाइक, है, एंड कमिंग फ्रॉम अ प्रिविलेज पीपल बिगिन टू अंडरस्टैंड कि हाँ भाई, दिस एक्टिंग और दीज दिस अदर स्टफ, थिंग्स मैटर, हाँ, मतलब वो मैटर, एक एंड होलिस्टिक यू अप्रोच कैन, लेते हैं ना, हाँ, होलिस्टिक अप्रोच, और तुम एक देख, ओवरऑल अप्रोच लेते हैं, वो बंदे की पूरी एग्जैक्टली, डेवलपमेंट पे काम करते हैं पूरी कि वो डेवलपमेंट। इंटरेक्ट भी करे, वो पढ़े भी सही, उसकी एक ओवरऑल डेवलपमेंट हो जो जरूरी है। एंड यार पढ़ाई की डेफिनेशन बदलती है ना, मतलब इफ यू आर कमिंग फ्रॉम दैट एरिया वेयर यू अंडरस्टैंड कि कॉमेडी को स्टडी करना भी पढ़ाई है, हाँ सिर्फ फिजिक्स पढ़ना पढ़ाई पढ़ाई नहीं नहीं है, है तो तुम्हारा वो अप्रोच चेंज हो जाता है कि तुम मार्क्स के लिए फिर दूसरे मार्क्स के लिए प्रेशर या डालो कि भाई तू कॉमेडी सीख रहा है, अगर तुझे वो हाँ पसंद है तो उसमें ढंग उसमें से कर। काम करना है। बट होता क्या है यार, दिस इन इज दीज, द लाइक पॉजिटिव थिंग अबाउट कोरोना, यू कैन फोकस ऑन दीज थिंग्स, हाँ, इफ यू रियलाइज देम you can यू कैन realize your फोकस। हाँ, passions, you can find एंड your passions and stuff. ऑनलाइन लर्निंग का boon एक ये है, लाइक यू आर मिसिंग द एक्सपीरियंसेस Experience बट द अमाउंट ऑफ of नॉलेज एट योर डिस्पोजल इज वेरी हाई। yeah Because now I was scrolling my Instagram feed the other day, I saw Biswa Kalyanarath is teaching comedy yeah online. अब अगर वो चीज़ ऑफलाइन होती तो वो नहीं सिखा नहीं पाता, सीखा कौन जाता भाई कॉमेडी सीखने। बट yeah वो एक कोर्स की वजह से ही, जिन लोगों के दिमाग में हल्का सा हिंट था कि यार आई वांट टू गो टू स्टैंड अप कॉमेडी, दे yeah गॉट अ रेफरेंस टू लर्न फ्रॉम। you can you can work on yourself, you can introspect yourself what you want to do What in you want to life, do and then you can and find that passion. क्योंकि अब कॉलेज ऑनलाइन है तो आप चीट कर सकते हो, तो आपके पास हाँ पूरा टाइम है अपने हाँ, पैशंस पे काम करने exactly. का। अगर आपको कॉलेज में पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, you हाँ, can focus on other things. exactly dude, that's the actual thing to do in this lockdown. I genuinely feel कि अगर तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं है, this is a massive opportunity to start acting Yeah on your interest. And I guess there is now a wave of things like this. People who are into yeah photography have started following everyone has photography. started these Yeah, things. it's sort of initiate हो चुका Yeah, है, you just can like, experiment, you have the time to experiment yeah, what you like, what you what you like. don't And like. it has happened in the West already, right? People Yeah in the US do not necessarily ask you. हाँ वहाँ पे clear categorization है भाई कि ये बंदा, if they call them nerds, कि भाई वो, उसको रियल टाइम हाँ सब्जेक्ट्स पसंद उसको है, पढ़ना पसंद है तो हाँ वो पढ़ेगा और वो हाँ, काम करेगा। कोई बंदा हिपस्टर है तो उसको डिजाइन एंड ये सब हाँ पसंद है तो वो करेगा। हाँ They there are have, lot of opportunities out in the Western culture. and the acceptance rate is high हाँ यार, कि तुम accept करते they हो कि हाँ डिजाइनर है। their parents, the society accepts you and treat every single thing as work. It And treats the work equally. exactly. यहाँ पे इंडिया में यहाँ It's पे still नहीं है। not here. And like it might be present in the Tier 1 cities, in the metro cities, but in Very few people very few people who are but like well renowned. apart from the If you talk about normal society, yeah, apart from the metro cities, in cities like ours ours, or even bigger than this, people yeah are not ready to accept. no, They're like, no, तुम्हें doctor, engineer, doctor, engineer or lawyer, lawyer or बस chartered accountant or चार anything ऑप्शन है like that. तुम्हारे Yeah, पास, डॉक्टर बन जाओ,
इंजीनियर लॉयर ये। Yeah, they're running before the mainstream, right? And हाँ like I'll tell you from my personal experience, some of the best graphic designers that I know, या or some of the best even filmmakers I know, are stuck in courses which do not have anything to do with graphic designing or या राइट, filmmaking. Like my friend दे is आर a डूइंग इट filmmaker. फॉर देयर फैमिली, नॉट Yeah, फॉर देमसेल्व्स, they just, even if I दे आर consider डूइंग इट अंडर myself, प्रेशर, yeah, आई I'm फील लाइक दैट। yeah, I'm doing this degree. I genuinely feel at this point my college is adding no value to me. या I don't even listen to my teachers or the या courses सेम, I'm being taught. the knowledge and skills I need to perform experiments, I'm in Yeah, medical thing, yeah. तो उसके लिए मुझे वहाँ पे लैब्स में प्रेजेंट होना जरूरी है, Hmm. लेकिन अब यहाँ ऑनलाइन है तो मेरा कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, हाँ, मैं क्या ही and सीखूंगा। even if यार you are at the labs and तेरा interest उस चीज में है नहीं, like you have made this thing in mind कि ultimately why are we studying in this stuff, so that we can find this one thing which can pay our bills, right? Yeah. तो अगर तुम्हें पता है कि ये चीज मेरा बिल नहीं पे करने वाली, मैं चाहे कुछ कर लूँ, मैं उसको करके खुशी नहीं हूँ, या तो you're not gonna या have interest नहीं in that. करोगे, नहीं करोगे, तुम फेल हो ही जाओगे। exactly. तो and that's a thing that society never understand. They just say कि तुम्हें इसमें marks लाने हैं, and उन्होंने जो मतलब अपनी यहाँ की सोसाइटी है, उन्होंने ये जो नई स्ट्रीम्स हैं ये देखी नहीं है, उन्होंने हाँ, सिर्फ देखा ही वही जो ओल्ड चलता आ रहा है yeah, ना, the उन्हें mainstream, पता ही नहीं है, उन्होंने एक्सप्लोर ही नहीं किया कि these things also work exactly. in today's world। And I guess yeah, it somehow becomes our responsibility to, like, the odds are stacked against us, Yeah. right? Us से I mean the people who have some other interest, कि Yeah, किसी को content creation में है या like किसी the को, creatives, हाँ, the the artists, creative, the artists. तो what they need to do is they need to they show need to some results break to the their stigma peers. Stigma that हटा के भी यार, मतलब वो कैसे हटाएगा तू? हाँ वो ऐसे It's only when we're gonna possible, be successful in this हाँ, field, तुम्हें थोड़ा सा सक्सेस लेके आना पड़ेगा, थोड़ा सा सक्सेस और थोड़ा सा पैसा लाना पड़ेगा। हाँ, पैसा, भाई सक्सेस का तो वही है ना, हमारे पेरेंट्स पेरेंट्स को वही है ना कि जो मेन स्ट्रीम चलती आ रही है उसमें पैसा बहुत है, हाँ, पैसा बहुत ये कर है, या लेगा, सेटलमेंट बहुत है, सेटलमेंट है, तो तुम पैसा फाइनेंशियल लाओ, स्टेबिलिटी हाँ, चाहिए ना, तुमको पैसा लाओ, तो उनके लिए पैसा जरूरी है। हाँ, पैसा, और उनके आई लिए भी नहीं यार, वो दे, हाँ, वो ये मतलब सोचते वो हैं कि हमारा तेरे लिए पैसा मेरे है। लिए पैसा हो, मेरे लिए मेरी लाइफ अच्छे से जीऊँ मैं, हाँ, वही अपने उनका ये bills एंड pay कर गोल है ना, सकूं, खा बिकॉज सकूं। वी आर नेव की स्टार्टिंग में हमें लगता है कि हाँ, मैं ये काम कर लेता हूँ, वो बट भी हम, सही है अपनी जगह पे, दे आर कम्प्लीटली लेकिन completely right at their हमें places. कुछ करके दिखाना पड़ेगा अगर हम चाहते हैं कि उस फील्ड में हमें जाना है, जैसे Yeah. कंटेंट क्रिएशन है, फिल्म मेकिंग है, हाँ, और Art not है even जो। this यार, even anything else, if you want to study a subject that is not well known enough, Yeah. मान लो किसी को कोई ऐसा सब्जेक्ट पढ़ना है जिसके बारे में ज्यादा लोगों को नहीं पता, तो Yeah. अगर उसको भी, तो ही इज ऑल्सो समवन हु इज नॉट कन्फर्मिंग टू मेन स्ट्रीम नॉर्म्स, कि हाँ भाई मैं मैथ साइंस नहीं पढ़ने वाला हूँ, आई रादर वांट स्टडी लिटरेचर, बेसिकली कि मुझे लिटरेचर पढ़ना है, मुझे उसमें पसंद है। तो यू नीड टू फाइंड आउट अ वे जहाँ से तुम उससे अर्न कर सकते हो, Yeah. और अगर तुम्हें वो अर्निंग वगैरह नहीं करनी, तुम्हें अपनी फिलोसफिकल सोचना पड़ेगा कि तुम्हें लाइफ से चाहिए क्या। देयर आर पीपल हु डोंट वांट टू अर्न यार, कि मुझे पैसा नहीं चाहिए। एक वो तो होना चाहिए ना लाइफ में गोल कि मैं ये करूंगा, हाँ, you मुझे need to कुछ be पता होना चाहिए, clear in your head कि how you want to spend your life, what are your to figure goals, out yeah, how figure you're that gonna do out, it, how you're and gonna make money through it। yeah, and our current education system isn't teaching that to people. Yeah, it's broken, dude. Completely It's broken. broken as hell. I fucking hate it. Yeah, but what else we can do apart from hating it, dude? Like the new education policy is a bit motivating. Yeah. It's giving some relaxation to children, But still, it's focusing on the grades, the yeah, marks, it's the still- percentage. it's still on- It does not help yeah. you grow your creativity. हाँ, apart from वो creativity आपकी यार, पूरी डेवलपमेंट पे फोकस नहीं हाँ, करती, आपकी exactly, skills पे, the skills that will be needed in the real real life, life, वो तुम्हें उस कोई पे focus सिखाए नहीं ही करती। नहीं। And even in college, dude, I've seen people who have passed their college, who have landed so-called good jobs, high-paying jobs, Yeah. but still they're not sorted in their head about life, कि Yeah. उनको life में क्या क्या करना चाहिए। है। That's why we People see, leave IIT and become actors. हाँ, that's the revelation, right? कि तुम्हें समझ आता है कि मुझे लाइफ में करना करना क्या क्या था यार, जैसे, and if you can achieve this thing early on in life, Yeah. like if you're listening You to can it, if figure out- you're listening to this podcast, you should figure out कि तुम्हें You लाइफ में start चाहिए। figuring it out right now. हाँ, What do you want in your life? अभी से शुरू कर What दोगे, makes you happy? हाँ, 1.5-2 साल ना? एक्सपेरिमेंट करते रहोगे तो तुम्हें समझ Experiment आएगा। कि अलग-अलग फील्ड्स में जाके देखो मुझे क्या पसंद है, किसमें मजा आता है, किसमें Exactly. किक मिलती है। Yeah, I've heard a lot of people saying कि they started off because they thought कि हाँ मुझे बहुत पैसा कमाना है, ये वो, नहीं। but ultimately they realized कि नहीं। money wasn't the goal, something else was, and that shaped their way कि Yeah, हाँ अब true. मेरे लाइफ का वे ये है और True. मैं इसको ऐसे ऐसे करता हूँ। तो I really feel कि what education systems should teach is how to adapt to changes, how to react to changes, और basically life में कैसे जिए। जी, मतलब एक स्किल्स आपको सिखाएं जो Life इम्पोर्टेंट है, skills, life लाइफ skill. हाँ, Yeah. लाइफ स्किल्स होनी चाहिए ना,
जैसे फाइनेंस के बारे में स्कूल में ही अगर पढ़ाना शुरू कर दें, हाँ, अगर तुम्हारा अगर पैसे मान के लो बारे हाँ में, पैसा लोगों को मैनेज करना जरूरी हाँ है, वो जरूरी है ना, आना चाहिए। स्कूल में हमें कोई नहीं सिखाता। एंड नॉट इवन फाइनेंस डूड, फॉरगेट फाइनेंस, मतलब टीच वन अबाउट ऑफ द टॉपिक वी कैन से हाँ विच इज इम्पोर्टेंट फॉर आवर हाँ लाइफ। मनी के बारे में सब कुछ बताओ ना कि दिस इज मनी के मनी, बारे दिस इज में, हाउ यू मैनेज इट, हाँ एंड दिस इज द पॉइंट टिल इट प्रिपेयर्ड, मैटर्स। या मतलब ये भी बताओ ना कि मनी मैटर क्यों करता है। हम सबको क्या लगता है कि पैसा कमा लिया तो हम बहुत खुश हो जाएंगे, वही हो जाएगा, तो, वो होएगा। वी हैव उसके बीन पीछे का वाई, हाँ पर्पस क्या, व्हाई, पर्पस एंड वो थिंग्स। सारी चीजें। और ये कुछ चीजें हैं जो हमें लाइफ में बहुत ज्यादा, मतलब मेजरली कुछ मैक्रो लेवल पे कुछ ही हाँ चीजें हैं कि पैसा है, हैप्पीनेस है, इमोशंस, फाइनेंस के साथ साथ उनमें इमोशंस पे भी कैसे डील करते हैं, रिलेशनशिप्स। रिलेशनशिप्स, इमोशंस कैसे, हाउ टू मैनेज योर इमोशन। हम्म क्योंकि स्कूल वाला टाइम बड़ा क्रूशियल होता है, वहाँ पे हाँ सारे फकअप्स होते हैं रिलेशनशिप वाले। हम्म स्टूडेंट्स कांट मैनेज देयर इमोशंस एट दैट या टाइम। एग्जैक्टली तो ये सब भी स्कूल में ही अगर शुरू हो जाए हम्म तो इट विल बी बेटर, या आई थिंक, मतलब मुझे और लगता है। शुरू भी होने के बाद भी ये चाहिए ना कि जो टीचर्स हैं हम्म, वो इस चीज में सपोर्टिव हो, लाइक रादर देन हाँ कॉलिंग पीपल एक ना पॉजिटिव और ऑप्टिमिस्टिक सी या अप्रोच के साथ, ऑप्टिमिस्टिक, यस, पीपल ना नीड टू कि बी उसको डांटने के या हम्म क्रिटिसाइज करने के हाँ बजाय एक बेसिकली पॉजिटिव अप्रोच से पॉजिटिव क्रिटिसाइज अप्रोच करें में, ना, हाँ कंस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। कि तुम उसको कंस्ट्रक्टिवली समझाओ ये चीजें। हाँ एंड इवन टीचर्स शुड गेट a better idea about these things, because most of the हाँ times वो टीचर्स खुद भी नहीं सॉर्टेड होते हेड में। या राइट, एंड दे हैव देयर ओन yeah, प्रॉब्लम्स एंड and this स्टफ। thing is like the most important aspect of living a healthy or basically हैप्पी a लाइफ, containing life, कि या तुम हैप्पीनेस की अपनी फुलफिल्ड डेफिनेशन सेट लाइफ, करो, फुलफिल लाइफ, कि तुमने जो सोचा तुमने हाँ वो किया। वो किया, तुम किसी का नॉर्म मत पकड़ो। अब जैसे मान लो मैंने बोल दिया कि भाई हैप्पी लाइफ वो है जिसमें तुमने 20% पैसा कमाया, हाँ 40% सबकी वकेशन गए, अपनी अलग अलग सबकी डेफिनेशन है अपनी ना अपनी वही। हैप्पीनेस की, एंड अ लॉट ऑफ कंटेंट क्रिएटर्स आर एक्चुअली डूइंग दिस जॉब फॉर टीचर्स, राइट। या मतलब मेरी तो मैक्सिमम लर्निंग अबाउट लाइफ, अबाउट स्टार्टअप्स, अबाउट फाइनेंस, मनी, फिलोसफी, सब कुछ ऑनलाइन हुआ है। सब कुछ स्कूल में मुझे यूट्यूब से सीखा है, या स्कूल से कुछ सीखा ही नहीं हमने, सब कुछ स्कूल यूट्यूब से से, सीखा है भाई कि मार्क्स पॉडकास्ट मार्क्स सीखा कैसे है। लेते हैं। हाँ स्कूल से स्कूल सिर्फ यही सीखा है, लेजिट मैंने स्कूल से यही सीखा है। इफ मार्क्स आई गो कैसे बैक लेते टू माई हैं, स्कूल, आई हैव हैड मार्क्स सम गुड कैसे लेते हैं टीचर्स। अपने टीचर्स और अपने पीयर्स को इम्प्रेस करने के लिए, बस एग्जैक्टली, स्टेटस गेम कैसे खेलते स्टेटस, हैं, हाँ बस उससे ज्यादा कुछ नहीं मेरे सीखा इतने स्कूल में। नंबर आए, मैं ये हूँ, हाँ उससे ज्यादा। कुछ नहीं एंड सीखा, आई in the hindsight I realized कि most of the students who were not good at getting marks were way better at life. या बहुत ऐसे बंदे थे जिनको बहुत कुछ पता था यार उस यू टाइम नीड पे। टू बिकम लाइफ स्मार्ट रादर देन हाँ बुक स्मार्ट। या एंड यू नीड टू बिकम जस्ट गुड एट लाइफ, तुम्हारी डेफिनेशन को पूरा करो। एंड आई वुड लाइक टू जस्ट रिवाइज टू आवर लिसनर्स कि कभी किसी का जनरलाइज कॉन्सेप्ट नहीं एक्सेप्ट करना चाहिए। असली असली सस्टेनेबिलिटी लाइफ में तभी आएगी, मतलब अगर तू किसी बनी बनाई चीज को When ही you उठा figure out ले। yourself, हाँ what do you like, वही, और what ये makes you happy, what is एग्जैक्टली how something is making your life fulfilling in a way, एंड ये चीज हर बंदे के लिए डिफरेंट होती है। yeah एंड इन अ वे बाय रनिंग आफ्टर मार्क्स एंड चीटिंग वी आर जस्ट कंफर्मिंग द जनरल नॉर्म। और अभी के लिए वो जरूरी भी है, इट्स लाइक सर्वाइवल पिल, कि अगर मैं नहीं किया तो मैं सर्वाइव ही नहीं कर survive नहीं पाऊंगा। कर देयर इज नो पाऊंगा। वे टू फाइट विद द पेरेंट्स व्हेन दे कांट हाँ अंडरस्टैंड। वही तो, But it's our responsibility now that for our younger siblings, we make an environment जहाँ पे where they can learn new things, yeah work on themselves, yeah they can become themselves, not right? just become book smart, they should become smart in life, हाँ how to deal with उनको things in their वही, life, उनके पास वो अपनी फ्रीडम and हो कि yeah तुम्हें करना क्या है। इट्स बेसिकली मे बी द रूट कॉज ऑफ एवरी इविल इन सोसाइटी इज जनरलाइजिंग, कि yeah तुम एक चीज को जनरल स्टैंडर्ड बना देते हो कि अब सबको करना है और हाँ सब वही भागने तो, लगते हैं। फिर वो स्टैंडर्ड सेट कर दिया ना, सब वैसे जा रहे हैं तो आपके पेरेंट्स भी सोचते हैं कि इसको भी यहीं पे उनका पहुंचेगा। वही, उनका यार जेन्युइन फियर हो जाता है, राइट। इट्स Yeah. द फोमो कि भाई हाँ इफ आई मिस आउट दैट थिंग तो मेरा कुछ नहीं कुछ होगा। नहीं इट्स होगा। जनरल फोमो। जैसे हमारे दोस्तों में कभी कभी हो जाता है कि इफ एवरीवनस डूइंग अ थिंग तो हम भी सोचते हैं हमें वो करना पड़ेगा। इफ एवरीवनस वेयरिंग Yeah. पर्टिकुलर टाइप ऑफ शू हमें लगता है हमें हाँ, करना पड़ेगा, हमें वरना करना पड़ेगा। व्हाट इफ कुछ हमें तो वो हो जाए। इंक्लूड नहीं करेंगे सोसाइटी में अपने हाँ साथ, इंक्लूड ये नहीं सारी करेंगे, चीजें। वी विल सक एंड स्टफ लाइक दैट। हाँ तो वी हैव टू एक्चुअली अंडरस्टैंड कि भाई ये चीज जरूरी नहीं है कि मार्क्स आ रहे हैं नहीं। और ये Yeah. चीज बहुत लोगों ने भूली है भाई। वो मूवी तारे जमीन पर वो एवरीथिंग अबाउट इट, इट्स लाइक एन अमेजिंग मूवी। उसके गाने सुन के भी तुम्हें अच्छा लगता थ्री है। इडियट्स, थ्री इडियट्स इट्स आल्सो अबाउट इट। वो आमिर खान हैज बीन हाँ, डूइंग, मतलब वो तब कब से समझा रहा है, समझ नहीं रहे भाई, लोग। समझो। स्किल्स मैटर करती हैं, हाँ सिर्फ ग्रेड्स मैटर नहीं करते। हाँ, अगर तुम्हारी एक skill- बंदा है उसने बहुत अच्छे कॉलेज में एडमिशन लिया, हम्म, उसके पास स्किल्स ही नहीं थी, तो उसको कोई क्यों रिक्रूट करेगा। हाँ वही और वही एक सेम बंदा उसने अच्छे नॉर्मल से कॉलेज से वो करी, उसके मार्क्स अच्छे नहीं थे लेकिन उसके पास स्किल्स थे, उसके हाँ, पास उसको उसके बोलना पास आता था,
हाँ उससे बेटर जॉब कम्युनिकेट करता था, हाँ उसको अगर उसको जॉब करनी परसुएशन है, आती थी, अगर उसको वो जॉब करनी है हाँ, और उसके पास वो स्किल है तो वो ले जाएगा जो। हाँ, आज के टाइम पे इवन यू डोंट हैव अ डिग्री बट यू हैव स्किल्स, यू स्टिल कैन लैंड अ जॉब। भाई दैट्स व्हाट गूगल डिड, राइट? गूगल अंडरस्टूड कि if they go to Harvard they won't necessarily get better engineers, Yeah. उनको better engineer तब मिलेंगे जब वो ये सब कुछ हटा दें हटा दें। कि भाई we don't care if you have a college degree, क्योंकि पता है भाई कंप्यूटर साइंस की क्लास में बैठ के Yeah. कंप्यूटर्स की हिस्ट्री पढ़ने के मार्क्स ऑन करके हाँ, तुम्हें कोई फायदा एप्स नहीं है। बनाना आएगा नहीं, Yeah. तुम्हें कोड लिखना, एल्गोरिदम सॉल्व करना Yeah, आएगा right. नहीं, तुम्हें वो तब आएगा जब तुम वो चीज कर रहे हो, तुम उसके लिए पैशनेट हो। Elon Musk did the same thing हाँ, for kids। हाँ, उसने अपना खुद का स्कूल बना दिया जहाँ पे वो अपने बच्चों को अभी से उनका जो इंटरेस्ट है उन्हीं टॉपिक्स को पढ़ाता है। हाँ, वहाँ पे एआई पढ़ाता है, ऑगमेंटेड रियलिटी पढ़ाता है, इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ाता है, और वो स्किलफुल, मतलब वो दिखाता है कि ऐसे होता है प्रैक्टिकली, rather than बुकिश नॉलेज। हाँ आई गेस मार्क्स से ना हमारी नॉलेज लिमिट भी हो जाती है। लाइक इलॉन मस्क के मुझे याद आया कि इलॉन मस्क हैज थॉट ऑफ सो मेनी थिंग्स फ्रॉम टेस्ला टू स्पेसएक्स टू न्यूरालिंक। इन सब में कुछ भी ऐसा मेजर कॉमन नहीं है। जैसे एक होता है ना कि यू आर इन पेट्रोलियम सेक्टर, तो तुमने पेट्रोलियम से कुछ मिलता जुलता कर लिया, Right. ये ड्रास्टिकली डिफरेंट डाइवर्सिफाइड। हाँ, और वो डाइवर्सिफिकेशन का रीजन ये है कि उसकी नॉलेज की कोई लिमिट नहीं है। अगर वो मार्क्स से ही जज करता तो वो जिस पाथ पे चल रहा है उसी पाथ पे चलता रहता है कि हाँ भाई मैं मैथ्स पढ़ रहा हूँ, लिमिटेड हो जाती है, उसके बाद वो जॉब करता रहता है, लेकिन वो नहीं करता ना। वही ना, ये एजुकेशन सिस्टम इज टीचिंग पीपल हाउ टू लर्न, how to unlearn, how to learn again, yes, the new learn, thing, unlearn, learn again, हाँ, or how to treat people, gratitude is missing from people, yeah, and empathy is missing. These things needed to be taught in an early age, exactly, and they are necessary, क्योंकि एक टाइम के बाद फिर वो तुम्हारा रूटीन बन जाएगा, तुम्हारा you will get फिर वो used एक to it, पैटर्न बन जाता है ना। और फिर वही ये भी चीज तू अभी बोल रहा था, लर्न अनलर्न, फिर इसी पैटर्न को तोड़ना, एक नए पैटर्न के साथ बनाना, फिर वैसे चलना। स्कूल में हम 13,000 आवर्स स्पेंड करते हैं अपनी लाइफ के, 13,000 आवर्स। आई वाज वाचिंग अ डॉक्यूमेंट्री, तो उन्होंने काउंट किया था, we spend 13,000 hours in our school. And dude, we have written कि अगर तुम 10,000 घंटे एक चीज पे लगाते हो, you get better. And there's a theory like if you spend 10,000 hours on a thing, you become the best or perfect at it. And you become perfect at chasing scores, chasing marks. Scores. That's the whole. We need to change that thing. Exactly. We need to spend 10,000 hours again. Exactly. Dude, reshaping ourselves. And I have noticed that CBSE has all of these subjects. अगर तू जैसे वो फॉर्म भरते हो ना, उसमें सब्जेक्ट देखो भाई, बहुत सब्जेक्ट है यार। हाँ। मेडिकल एड, फैशन, सब दिखाने के लिए है। मतलब वो कहीं प्रैक्टिकली आई नहीं रही, सोसाइटी ने जैसे उन्हें एक्सेप्ट ही नहीं करा। अब गवर्नमेंट तो क्या करी, गवर्नमेंट तुम्हें फ्रीडम दे दिया गवर्नमेंट ने, लेकिन जब तुम खुद ही एक्सेप्ट नहीं करोगे तुम्हारा बच्चा फैशन डिजाइनिंग करके कुछ अच्छा कर सकता है, क्या पता उसकी ड्राइंग अच्छी हो। आजकल तो यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। एग्जैक्टली, बट भाई लोग मानते ही नहीं है। It's gonna take time. Yeah, I hope it gets better. It gets better. Our society stop watching numbers and dude, works on the skills and things like their children love. Cheating or being on all-time high is a massive indicator कि there is a problem. Yeah, there is a problem. Yeah, अगर you love a thing, you can't cheat like on it. If you want to study, you love those subjects. Yeah. वो बंदा चीट नहीं करेगा। Have you ever heard a मतलब person passionate about cricket saying कि मतलब एक आधा चीट डे चलता है, बट तुम ये नहीं देखोगे कि वो सारे एग्जाम में मस्त चीट कर रहा है। उसको पता है मैं कहीं जा ही नहीं पाऊंगा भाई। If I have to make it to the Indian team, मुझे खेलना पड़ेगा और वही मेरा escape है। If you see a filmmaker, तो मतलब कम से कम समझ आता है यार। If तुम्हारी कोई फिल्म मेकिंग में कोई गलती रह गई and you are passionate about it, you will understand कि हाँ मैंने गलती करी, I'll change my cheating में there is no regret, dude. Fuck regrets. I don't regret cheating. I don't regret. I fucking love it, dude. And that's the symbol that I'm we don't passing my exams with good marks. Good marks, dude. My parents are happy. My teachers are happy, and they can't do anything about it. They know we are cheating, but they still can't do anything about it. And that's like we just take mark कि हाँ भाई society ने ये बोला था वो हमने कर दिया. But when this online world ends and there is again strict, तो तुम क्या करोगे? हमें फिर से वही बैठना पड़ेगा ना। हमने अपनी लाइफ के 13,000 घंटे उस काम करने में लगाए, तो हम फिर वही करेंगे। मेमोरी होती है, हम फिर मार्क्स के लिए दौड़ेंगे, अपने इंटरेस्ट को क्रश कर सकते हैं। ये कॉन्ट्राडिक्ट करता है हमारी बात को जो हम बोल रहे थे, हम फिर वही भागेंगे। But we'll see, we'll drive change, hopefully. We'll learn, we'll unlearn, and then we'll learn again. The message to our listeners would be कि भाई help your siblings, help yourself first, and then
help your siblings, the peers, children's around you, the children, the coming the generation younger, around you, the younger ones. like your brother, you have a sister, you have friends. हाँ, Tell just- them what's matter and what does हाँ, not what matter. matters, what not. And I guess that's it about our rant on education system. Peace. Peace. See you in the next episode.